I'm an orthopedic surgeon at Fro Specialist Hospital, Dr. Adnan Feroz Khan. आज मैं एक एजुकेटिव वीडियो शूट करने वाला हूँ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के लिए विच इज़ कॉल्ड शोल्डर डिसलोकेशन। शोल्डर डिसलोकेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है विच इज़ वेरी कॉमन बिटवीन एजेस ऑफ 18 टू 35 ईयर्स और 40 ईयर्स के बीच में बहुत कॉमन होती है। ये जितने भी पेशेंट्स हैं एज वेल एज फॉर ऑल द डॉक्टर्स के लिए भी ये एक एजुकेटिव वीडियो होगा। आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग, मैं दो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूंगा क्योंकि हिंदी इज़ वेल अंडरस्टूड बाय ऑल द पेशेंट्स और उन्हीं के लिए मेनली ये वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग एक एक स्टेप दिखाएंगे कि पेशेंट कैसे आता है शोल्डर डिसलोकेशन के साथ, वो किस एटीट्यूड में आता है, कितना पेनफुल कंडीशन होता है। इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ओरिजिनल पेशेंट, ये सचमुच का पेशेंट नहीं होगा। इट्स गोइंग टू बी अ सिमुलेटेड पेशेंट, वन ऑफ माय स्टाफ्स विल बी एक्टिंग एज अ पेशेंट, क्योंकि अगर मैं ओरिजिनल पेशेंट लूंगा इट doesn't look nice that the patient comes with severe pain and I'm shooting a video. So that's basically not, it's against ethics as well. So this is going to be all a simulation of the patient and it's not going to be an original patient. तो इस वीडियो में हम लोग एक एक स्टेप शूट करने वाले हैं। द वे द पेशेंट विल कम अप टू यू। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जब शोल्डर डिसलोकेशन होता है, हम लोग एक्सरेज कैसे दिखते हैं, एक्सरे में कैसे दिखेगा शोल्डर डिसलोकेशन। जब शोल्डर डिसलोकेशन दिखेगा तो हम लोग उसमें ट्रीटमेंट क्या करने वाले हैं, रिडक्शन कैसे करेंगे शोल्डर का। अराउंड 4 मेथड्स होते हैं शोल्डर डिसलोकेशन के, एक एक मेथड मैं डिस्क्राइब करूंगा। उसके बाद क्या मैनेजमेंट होता है, कितनी देर के लिए हम लोग एल्बो को इमोबिलाइज करेंगे, कौन सा ऑपरेशन करना चाहिए, क्या ओपन सर्जरी करेंगे या आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज करेंगे, एक एक स्टेप हम लोग इस वीडियो में डालेंगे। सो नाउ विल बी ब्रिंगिंग ऑन द पेशेंट विद शोल्डर डिसलोकेशन। So as you can see, ये हमारे पेशेंट आते हैं। सो दिस इज़ द पेशेंट हु हैज़ कम अप टू अस विद शोल्डर डिसलोकेशन। अब ये पेशेंट हैं तो इनका जो शोल्डर डिसलोकेट हुआ होता है, तो दीज पेशेंट्स आर ऑब्वियसली, इनका शोल्डर डिसलोकेट नहीं है तो इनको इतना पेन नहीं है। ही इज़ वन ऑफ माई स्टाफ मेंबर्स। लेकिन इफ इट वाज डिसलोकेटेड, तो दिस इज द एग्जैक्ट पोजिशन इन विच अ पेशेंट प्रेजेंट्स टू अस। आप देख रहे हैं कि ही इज एक्चुअली होल्डिंग हिज डिसलोकेटेड shoulder with the other hand. This is the fine hand and this is the dislocated shoulder. तो ये जब शोल्डर डिसलोकेट होता है, ये कॉन्ट्रूर जो शोल्डर का होता है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। ठीक है, ये इस आर्म को बेसिकली पेशेंट सपोर्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये अपने दूसरे नॉर्मल हैंड से इस आर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये इट इज़ टोटली पेनफुल एंड ही इज़ नॉट एबल टू यूज हिज हैंड एज हिज शोल्डर एट ऑल। द शोल्डर इज माइल्डली abducted. The forearm will be internally rotated because of extreme pain and he will be supporting the entire limb with the other hand. So now what we do? What we do is that we actually go and ask the rheologist to actually go and take an X-ray of the anterior of the shoulder. तो जब एक्सरे हम देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक्सरे। आप देख सकते हैं एक्सरे में कि the shoulder is completely out of the socket. When we order the X-ray, we can see that the shoulder joint has completely dislocated out of the socket, and it is not inside the socket. In fact, anteriorly to the socket. तो आपने एक्सरे देखे हैं, अभी एक्सरे में आपने देखा कि जो शोल्डर का जॉइंट है, जैसे दिस इज द शोल्डर, तो एक्सरेज में तो आपको दिखाई दिया था। तो दिस इज द जॉइंट और ये शोल्डर जो होता है, इट बेसिकली कम द हेड ऑफ ह्यूमरस कहते हैं। दिस हेड ऑफ द ह्यूमरस इट कम्स इन एंटीरियरली, ये यहाँ पे आगे आके रुक जाता है। तो ये सॉकेट जो है ये बिल्कुल खाली रह जाता है और शोल्डर आगे आ जाता है। तो हमारा क्या मकसद है, इस शोल्डर को, जो ये शोल्डर जो आगे आ चुका है, इसको हमें वापस अपने सॉकेट में बिठाना है। तो इसको बिठाने के 4-5 तरीके होते हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो हम लोग यूजली फॉलो करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये शोल्डर डिसलोकेशंस आर ऑलवेज रिड्यूस्ड अंडर माइल्ड सेडेशन, बिकॉज अगर हम सेडेशन नहीं देते हैं, ऑब्वियसली अंडर सम एनेस्थीसिया, तो ये मसल्स काफ़ी स्टिफ हो जाती है, और अगर मसल स्टिफ हो जाती हैं तो शोल्डर रिडक्शन बहुत मुश्किल से आता है। तो बिकॉज दिस इज ओनली अ सिमुलेटेड पेशेंट्स, वी आर जस्ट गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट द मेथड्स ऑफ रिडक्शन and we are not going to show you all the anesthesia and all those procedures or protocols. But saying that, we always do reduction of shoulder under anesthesia because it is also not painful to the patient. Patient भी काफ़ी comfortable होता है जब हम anesthesia देते हैं, और reduction भी बहुत आराम से आ जाता है। So now we are basically making the patient lie down. अल्तमश आप यहाँ पे लेट जाइए। It is severely painful. शूज उतारना। So we basically usually use around 4 methods.
जो फर्स्ट मेथड होता है शोल्डर रिडक्शन का, हम लोग उसको कहते हैं कॉकर्स मैन्यूवर, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स यूज्ड। तो ये शोल्डर में हम लोग क्या करेंगे, वी बेसिकली टेल द पेशेंट रिलैक्स, ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू बी अंडर सेडेशन, बट वी होल्ड द शोल्डर, और सबसे पहले हम लोग इसको ट्रैक्शन देते हैं। यू नो इट्स रियली पेनफुल एंड ही विल नॉट बी एबल टू बेयर द पेन इफ आई एम डूइंग इट अंडर full consciousness. So this patient is under sedation, assuming that we hold the arm and we apply traction, putting traction, and then we externally rotate the arm. Okay, so first step traction. Okay, अब ऐसे सीधे रहना है. First step traction, then external rotation, then adduction, and then internal rotation. And as soon as we do this, the shoulder joint pops into its place. This is the first method of reduction of the shoulder, which is called as the Coccus method. Once more, first step traction, external rotation, adduction, and then internal rotation. And we keep it like this with the help of a slave. So this is the first method. But sometimes this method, ये method काम नहीं करता, because either some muscles are very stiff और बहुत सी problems होती हैं जिसकी वजह से हम लोग करते हैं. Which I usually, I usually prefer the method is that it is basically a Stimson's method, लेकिन अब a sort of modification of it. तो मैं पेशेंट को क्या करता हूँ, मैं पेशेंट को उल्टा लिटा देता हूँ, उल्टा लेट ऐसे, और शोल्डर को हैंग कर लो. ना इसमें क्या होता है कि शोल्डर को मैं यूजुअली हैंग कर लेता हूँ. एक दो बार मैंने पेशेंट को अंडर, ही वाज फुली कॉन्शियस एंड आई रिड्यूस द शोल्डर लाइक दिस, इट इमीडिएटली पॉप इनटू इट्स प्लेस एंड इट वाज रियली नॉट पेनफुल. तो बेसिकली इसमें क्या फ़ायदा होता है, इसमें हम लोगों को एक सपोर्ट मिल गया, एक फलक्रम मिल गया ट्रैक्शन देने के लिए. कॉकर्स मैन्यूवर में मुझे खुद ट्रैक्शन देना पड़ता था, और कई बार हम लोगों को एक काउंटर ट्रैक्शन भी देना पड़ता है. इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, ना ही दूसरे आदमी की ज़रूरत है. वी मेक द पेशेंट लाई प्रोन, ओके, ही इज़ लाइंग प्रोन, और यहाँ पे सपोर्ट होना ज़रूरी होता है कि थोड़ा सा ट्रैक्शन आए लाइक दिस. ठीक है. स्टिम्सन्स मेथड में हम लोग यहाँ पे वेट्स डाल देते हैं, और उस वेट्स के सहारे ये रिडक्शन अपने आप आ जाता है शोल्डर में. बट it's a slight modification of that method which I usually practice, and it's a very efficient method if at all you want to do it in patients who are not being reduced by other methods. So what we do is that we apply traction, okay, and slightly, as soon as we give traction, we pull the arm downwards, so you can see, flex the elbow, okay, so you have to flex the elbow and then you apply traction. Sorry. As soon as you apply traction, you try to externally rotate the arm. So when you externally rotate it, immediately you will actually hear a sound that the ball of the humerus will suddenly pop into its socket. So apply traction, okay, wait for around 10 seconds, gradually increase the traction, and then externally rotate the arm, externally rotate the shoulder, and you will actually hear a voice with popping of the shoulder back into its socket. जैसे ही हम लोग सुनेंगे, the shoulder is reduced. Okay, once more, ये फलक्रम बहुत ज़रूरी होता है ट्रैक्शन देने के लिए. हम लोग आर्म को खींचेंगे डाउन, नीचे की तरफ, downwards, and then if it gets reduced by itself, then no need to do anything else. But if it doesn't reduce, slightly मैं हल्का सा एक्सटर्नल रोटेशन दे देता हूँ, ऐसे एक्सटर्नल रोटेशन दे देता हूँ, विद ट्रैक्शन बीइंग मेंटेन्ड. ट्रैक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन, द शोल्डर विल इमीडिएटली पॉप इनटू इट्स प्लेस. So this is the other method which I usually practice, a slight modification of Stimson's method. मान लीजिए इससे भी नहीं आया, तीसरा मेथड क्या होगा, सीधा लेटना होता है. सो दिस मेथड थोड़ा सा अजीब लगता है,
लेकिन this is one of the methods which is being practiced. What we do is that we apply traction to the arm and with one foot we apply a foot over here, क्योंकि शोल्डर जो है आगे आ चुका है, तो इस बॉल को हमें वापस सॉकेट में अंदर बैठाना है। तो हम क्या करेंगे, what we do is we use our foot in this patient and we put our foot here. तो ये फुट कहाँ पे है, ये फुट जो है हमारे जो शोल्डर आगे आ चुका है उसको पुश कर रहा है सॉकेट के अंदर, और हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ट्रैक्शन दे रहे हैं। सो इट्स लाइक दिस, अप्लाई द फुट हियर, पुट प्रेशर विद द फुट over the shoulder so that the shoulder goes back into its socket and apply traction. तो इस तरह से, this is also a wonderful method and it is if other methods aren't successful, this usually works, you know, because we are actually providing a good fulcrum here and we have entire control, पूरा control हमारे हाथ में होता है. So this is the way, but we have to push, manipulate the shoulder with our foot, और हम शोल्डर को अंदर पुश करेंगे, सॉकेट में बैठ जाएगा और इसको हम लोग ट्रैक्शन देंगे. दिस इज कॉल्ड एज हिपोक्रेट्स मेथड. बैठ जाओ. सो 3 methods I've described. One more method, if it is a lax shoulder, कभी कभी सिर्फ एक हल्का सा एक्सटर्नल रोटेशन करता है और शोल्डर अपना बैठ जाता है. So what I usually do is, as soon the first method which I usually try is this one. Whenever the patient comes with shoulder dislocation, always I try to first slight traction and then I try to external rotate the shoulder. If it doesn't get into its place, अगर नहीं आते तभी मैं दूसरे methods try करता हूँ. So we have basically described around the Cocker's method, the क्या कहते हैं, Hippocrates method, Stimson's method, and the last method which I would like to describe is a Milch method. Milch method में हम लोग क्या करते हैं, लेटना तो So in Milch method, what we do is that we basically while applying traction to the arm, हम लोग traction देते हुए, ठीक है, और शोल्डर को यहाँ से मैनिपुलेट करते हैं. एक हाथ से ट्रैक्शन दे रहे हैं, एक हाथ से हम लोग जो शोल्डर है जो आगे निकल चुका है उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, वापस सॉकेट में धक्का दे रहे हैं और इसको एक्सटर्नल रोटेट कर रहे हैं. एंड देन एज सुन एज वी हियर द वॉइस पॉपिंग बैक इनटू इट्स प्लेस, वी बेसिकली इंटरनल रोटेट. Okay, so what we do is that we apply traction, external rotation, and try to manipulate this. And then as soon as you hear the voice back into its socket, we try to put it here. So this is the Milch method which we are trying. These are 4 to 5 methods. ये 4-5 methods होते हैं. Thank you Altamash. तो ये 4-5 मेथड्स होते हैं, जिसके बाद ये शोल्डर जॉइंट जो होता है वो अपनी जगह आ जाता है. एंड देन वी यूजुअली गो फॉर द एक्सरे चेकअप. एक्सरे में हम लोग देखते हैं कि शोल्डर अपनी जगह में वापस आ चुका है, और वो देखेंगे कैसे कि दिस जॉइंट विच वॉज इनिशियली हियर, इट बेसिकली गोज बैक इनटू इट्स प्लेस, एंड दिस बेसिकली shows it all कि the shoulder has been well reduced. I'll show you the x-ray now. Pause. So this is the x-ray which has been taken after reduction of the shoulder, and as we can see how nicely the shoulder joint has gotten back into its original position. So we have done the x-rays, और x-ray मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से shoulder joint दिखेगा x-ray में, कि पहले shoulder आगे की तरफ था, यहाँ पे आया हुआ था, and then after reduction और जितने भी maneuvers मैंने करे हैं उस shoulder वापस अपनी जगह में आ जाता है. So now the patient is totally pain free. इनका एक्सरे हो चुका है, एंड यू नो एक तरह से स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग, इट्स अ वेरी स्टेबल शोल्डर, और ये यूजुअली इट डजंट रीडिसलोकेट, प्रोवाइडेड कि अगर लिगामेंट्स बहुत लैक्स है या ख़राब चोट लगी है, इट कैन रीडिसलोकेट, बट usually in the first visit it doesn't dislocate easily. So this is a shoulder joint which is basically has been well reduced. कॉन्टूर बहुत अच्छा मेंटेन हो चुका है, शोल्डर बहुत अच्छा मेंटेन हो चुका है, और इसमें हम लोग बस एक एल्बो स्लिंग दे देते हैं. तो ऐसे पेशेंट्स यूजुअली गो हैप्पी एट होम. वी हैव रिड्यूस्ड द शोल्डर. और अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि शोल्डर डिसलोकेशन एक बार रिड्यूस हो जाता है तो उसके बाद क्या, मतलब क्या हम एल्बो स्लिंग 3 हफ्ते तक लगाएं, 1.5 महीने तक लगाएं, या कब तक लगाएं?
दो रीसेंट पब्लिकेशंस जो आई है, जो मैं आपको पेपर्स भी दिखाऊंगा, कि इट इज़ एडवाइजेबल टू ओनली इमोबिलाइज द शोल्डर फॉर ओनली 1 वीक। 1 वीक काफ़ी होता है शोल्डर को इमोबिलाइज करने के लिए। इफ़ इट इज़ एन अनस्टेबल शोल्डर, आप उसको चाहे 3 हफ्ते इमोबिलाइज करो या 6 हफ्ते इमोबिलाइज करो, वो रीडिस्लोकेट होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई भी शोल्डर डिसलोकेशन हो गया उसको आप 1.5 महीने तक आप कहेंगे ऐसे ही लटकाए रखो। उससे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ना कि बेहतर होती हैं। स्टिफनेस बढ़ जाएगी, मसल्स विल बिकम atrophied. So if it's a stable shoulder, what my advice, and what not based on my advice but based on publications, is that we can only mobilize the shoulder for 1 week, and 1 week is more than enough. तो 1 वीक बाद जब पेशेंट्स आएंगे उसमें हम लोग पेरी स्कैपुलर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज एंड रोटेटर कफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर लेंगे, विच विल बी ऑब्वियसली अंडर फिजियोथेरेपी गाइडेंस। ठीक है, अब बात आई ये क्यों डिसलोकेट हुआ, और अगर ये डिसलोकेट बार बार होगा तो हमें करना क्या चाहिए। वाई डज द शोल्डर डिसलोकेट? द शोल्डर डिसलोकेशन जब होता है जब कोई इंजरी या कोई एंटीरियर फोर्स शोल्डर पे आए और बेसिकली कॉसेज डिसलोकेशन द शोल्डर। शोल्डर जॉइंट जो है ये कई टिश्यूज़ होते हैं यहाँ पे जो शोल्डर को बांध के रखते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू जो होता है वो ये होता है, जिसे हम लेब्रम कहते हैं, ये वाला। दिस इज कॉल्ड द लेब्रम, दिस वन। और अगर ये लेब्रम फट जाता है तो ये शोल्डर जो है इसके सॉकेट नहीं बन पाता, तो क्या होता है, ये शोल्डर आगे चले जाता है। तो वेन एवर देयर इज अ फर्स्ट डिसलोकेशन, जब पहला डिसलोकेशन होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट इंजरी जो होती है ये लेब्रल टिश्यूज के ऊपर होती है। दिस इज द टिश्यू विच इज बीइंग इंजर्ड एंड द शोल्डर गोज आउटसाइड। ये पहला डिसलोकेशन में सबसे कॉमन इंजरी होती है। उसके बाद हम लोग वापस रिड्यूस कर लेते हैं एंड वी इमोबिलाइज द शोल्डर फॉर 1 वीक। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स इसमें सही रहते हैं। प्रॉब्लम होती है पेशेंट्स में व्हेन द पेशेंट डिसलोकेट्स हिज शोल्डर बिटवीन एज 18 ईयर्स एंड 30 ईयर्स। 18 टू 30 ईयर्स के पेशेंट्स में रीडिसलोकेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। रेकरेंट डिसलोकेशंस बहुत कॉमन होता है बिकॉज इट्स एन एक्टिव एज, उसमें मसल्स काफ़ी एक्टिव होती हैं और डिसलोकेशन के चांसेस बहुत होता है इन पेशेंट्स में। आजकल ये कहा जा रहा है इफ़ इट्स एन एथलेटिक पॉपुलेशन, स्पेशली इन एथलीट्स या कोई भी स्पोर्ट्समैन हो और 18 एंड 30 के बीच में हो और फर्स्ट डिसलोकेशन हो रहा है, तो वी कैन गो फॉर एन ऑपरेटिव इंटरवेंशन, एंड द ऑपरेटिव इंटरवेंशन विच वी चूज इज यूजली एन आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी। Arthroscopic surgery is basically a minimally invasive surgery. हम लोग दूरबीन से करते हैं and we repair this tissue. Okay, this is the arthroscopic surgery. So what and obviously again if it's multiple dislocations अगर हो रहे हैं किसी पेशेंट को तो भी सर्जरी का इंडिकेशन होता है, लेकिन फर्स्ट डिसलोकेशन में आमतौर से सर्जरी का इंडिकेशन नहीं होता है। मेजॉरिटी पेशेंट सही हो जाते हैं। हाउएवर इन स्पोर्ट्स पीपल या एथलीट पॉपुलेशन में आजकल सर्जरीज की जा रही हैं बिटवीन एज ग्रुप्स 18 to 30 years of age, and that is also arthroscopic surgery. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन विच इज़ अराइजिंग इज, क्या हम ओपन सर्जरी करें जिसमें पूरा ओपन करना पड़ता है, या क्या हम आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करें जिसमें हम लोग सिर्फ दूरबीन से हम लोग पूरा ऑपरेशन कर लेते हैं। दिस इज मेनली फॉर ऑल द पेशेंट्स एंड इट्स नॉट फॉर द डॉक्टर्स, as all the doctors do understand when to go for an arthroscopic surgery and when to go for a लेटार्जिया प्रोसीजर। लेटार्जिया प्रोसीजर कहते हैं ओपन सर्जरी को। तो ओपन सर्जरी में हम क्या करते हैं कि ये पूरा खोलते हैं या शोल्डर को ओपन प्रोसेस में, और ये जो बोन है यहाँ पे, ये बोन, इस बोन को हम लोग इस सॉकेट में लगा देते हैं। तो ये सॉकेट का स्पेस बड़ा हो जाता है। ये जो सॉकेट इतना सा है, अब हम एक बोन यहाँ लगा देंगे ऐसे, तो वो स्पेस बड़ा हो गया, तो वो शोल्डर जो है डिसलोकेट हो नहीं पाता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो शोल्डर जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, स्पेस यहाँ पे है अभी, तो शोल्डर निकल जाएगा, डिसलोकेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम स्पेस को बढ़ा देंगे तो एक ग्लिनॉइड है, स्पेस बढ़ जाएगा, तो व्हाट हैपेंस, द शोल्डर बिकम्स, इट विल नॉट डिसलोकेट। तो ये मकसद होता है ओपन सर्जरी का कि ये जो बोन है, कोरोकॉइड बोलते हैं इसको हम लोग यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। तो इट्स बेसिकली दिस विल इंक्रीज द स्पेस ऑफ द ग्लिनॉइड। अच्छा, दूसरी चीज़, ये लिगामेंट जितने भी होते हैं ये स्लिंग इफेक्ट देते हैं एंड दे प्रिवेंट रीडिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर। These two are wonderful surgeries and they are especially made for redislocation of the shoulder. Dilemma इसमें है कि when to do an open procedure and when to do a closed procedure.
क्लोज प्रोसीजर मतलब आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी इज़ अ क्लोज्ड सर्जरी, उसमें हमें कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दूरबीन से पूरा ऑपरेशन हो जाता है। एंड ओपन सर्जरी को हम लेटार्जी प्रोसीजर कहते हैं, जिसमें हम पूरा ओपन करते हैं और कोरोकॉइड को यहाँ फिक्स कर लेते हैं। दोनों में हम लोग कैसे बताएं कौन सा ऑपरेशन कब करना चाहिए और ओपन सर्जरी किस में करनी चाहिए। तो ये ऑपरेशन जो डिसाइड करते हैं हम लोग, एक चार्ट होता है, उसे हम कहते हैं शोल्डर इंस्टेबिलिटी सीवियरिटी स्कोर। इन शोल्डर इंस्टेबिलिटी सीवियरिटी स्कोर, मैं अभी आपको दिखाऊंगा उस चार्ट को। इस चार्ट में आप 6 पैरामीटर्स होते हैं, 6 पैरामीटर्स हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एज होती है, फिर दूसरा कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में पार्ट ले रहा है पेशेंट या नहीं ले रहा, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में पार्ट ले रहा है, लिगामेंट्स कितने लैक्स है पेशेंट्स के, क्या कोई फ्रैक्चर तो नहीं है ह्यूमरस में, क्या कोई ग्लिनॉइड में कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। इन 4-5 पैरामीटर्स को देखते हुए हम लोग एक स्कोर देते हैं, और वो करीब 6, अगर वो स्कोर 6 से ऊपर है, 6 से ऊपर है, तो हम लोग ओपन प्रोसीजर करेंगे, और अगर वो 6 से नीचे है तो हम लोग क्लोज्ड प्रोसीजर करेंगे। मैं आपको पूरी डिटेल में अभी पूरा चार्ट दिखाऊंगा, और चार्ट में एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। दिस चार्ट विल बी इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में बात करूंगा इस चार्ट में। पीपल वांट टू अंडरस्टैंड, दे कैन अंडरस्टैंड, बट इट्स आल्सो फॉर द डॉक्टर्स हु नीड टू अंडरस्टैंड why are we doing an open procedure in some patients and why are we doing a closed procedure in some of the patients here. If अगर चार्ट में किसी पेशेंट को 6 से ऊपर स्कोर मिलता है, मोर देन 6 पॉइंट्स, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, एंड वी गो फॉर एन क्लोज प्रोसीजर। किसी पेशेंट को अगर 6 से ऊपर मिला स्कोर और हमने आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी कर ली, तो उसमें फेलियर रेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए द रेकरेंस रेट इज अराउंड, the recurrence rate is 70% if we go for an arthroscopic surgery in a patient who is having more than 6 points. However, if we basically go for an arthroscopic surgery in a patient who is having less than 6 points, the recurrence rate is only 10%. So this instability severity score of the shoulder is a very important chart to decide in which patients what to do, whether to go for an arthroscopic surgery or whether to go for a lethargic procedure. So this is the chart which I was talking about. So as you can see here, this is the paper which actually tells us that how long is the immobilization required after shoulder dislocation. This was a level 1 study, and which is the highest study which can be done. Immobilization after close reduction has long been the standard treatment for primary dislocation of the shoulder, and to determine the optimum duration and position immobilization after recurrent dislocation, we had conducted this study. So as you can see here, the study was conducted, and as been described in the methods, it was around 2083 published studies were identified, and it was 9 level 1 and level 2 studies were reviewed. Based on these studies, the results which were put on were that the immobilization required in after shoulder dislocation was around only 1 week. As you can see in the conclusions, the analysis of best available evidence indicates that there is no benefit of conventional sling immobilization for longer than 1 week for the treatment of primary anterior shoulder dislocation. That is, if anyone has sustained an anterior dislocation of the shoulder, the first time of dislocation has occurred, only 1 week of immobilization is necessary. An age less than 30 years at the time of injury is significantly predictive of recurrence, which we have already discussed. So that is the main thing, and it is not necessary at all to continue the immobilization for a period of 3 weeks or for a period of 6 weeks, because it will only worsen the condition and only increase the stiffness of your shoulder if you are only immobilizing the shoulder for more than 1 week. It is important to increase your exercises after 1 week rather than immobilizing the shoulder for a prolonged period of time. So as you can see, this is the score which I was talking about. It is the instability severity score of the shoulder. It has around 6 parameters, and based on these 6 parameters, we will be able to decide whether the patient is liable to go for an arthroscopic shoulder surgery or for an open lethargic surgery. We have a score of around maximum. We basically give an individual a score, and if the score is more than 6 points, the patient is liable to go for an open lethargic procedure. And if the patient gets a score of less than 6 points, you'll be going for an arthroscopic surgery procedure.
As we can see, if the age is more than less than if the age is less than 20 years of age, we give a score of 2, and if it's more than 20 years of age, we give a score of 0. We look at the degree of sports participation, whether it's competitive or non-competitive. We look at the type of sport, whether it is contact sports, non-contact sports. We look at the shoulder hyperlaxity, the hyperabduction being more than 105 degrees, or the what do you say, the external rotation being more than 85 degrees, which indicates shoulder hyperlaxity. We see for any hill sac lesions. Hill sac lesions are basically depressions in the shoulder head of the humerus. We look for any glenoid contour bone loss. So when you basically accumulate these scores, and if the score seems to be more than 6 points, we do not go for an arthroscopic surgery, but we go for an open surgery. Because a score of more than 6 points has an unacceptable recurrence risk of 70% and should be advised to undergo an open surgery. And acceptable, if the score is less than 6%, then we can actually go for an arthroscopic surgery. This was a brief description of the shoulder instability severity score, and based on this score, we can decide whether to go for an open or a closed procedure. I would also like to add one more point here, is that the glenoid contour is extremely important in deciding whether we go for a Latagia procedure or not. How do we assess the glenoid contour is basically we go for the CT scan. In the CT scan, we see how much bone loss is present in the glenoid, whether it is less than 20% or more than 20%. It is said that if the glenoid bone loss is more than 20 to 25%, it is always better to go for a Latagia procedure in order to avoid recurrence or failure of an arthroscopic surgery. So in order to calculate the glenoid bone loss, we usually see the amount of the articular defect present, and there's a rule on how to calculate this glenoid bone loss. So usually the radiologist does that job for you by you ordering a CT scan of that shoulder, and so that makes our job easier. I hope this brief description helps us to decide in planning of our surgery. Thank you. ये एक छोटा सा एक एजुकेटिव वीडियो था शोल्डर डिसलोकेशन के बारे में। एक कोशिश थी कि कोई भी जो आम पेशेंट्स होते हैं उनको एटलीस्ट अपनी प्रॉब्लम जो इसके थ्रू गुजर रहे हैं उनको समझ में आ जाए कि शोल्डर डिसलोकेशन अगर होगा तो उनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, क्या ओपन सर्जरीज होती हैं, क्लोज सर्जरीज भी होती है, इसमें कितनी देर हम लोगों को स्लिंग लगाना पड़ेगा, उसके बाद एक्सरसाइजेस कब शुरू कर सकते हैं। मैंने इसमें एक्सरसाइजेस का पार्ट बहुत फोकस नहीं करा बिकॉज दैट इज़ बेसिकली कमिंग इन द फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट्स। तो लेकिन आई यूजली स्टार्ट एक्सरसाइजेस आफ्टर 1 week, especially rotator cuff strengthening exercises and periscapular strengthening exercises. Short descriptive video था। अगर I really hope that this video will help you in some information, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ या कुछ क्वेरीज कभी भी हैं तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए कि आपको ये क्वेरीज हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस ऑफ योर्स। एंड इफ़ यू रियली लाइक दीज वीडियोस, आप मुझे सजेस्ट करें कि अगर और भी कोई एजुकेटिव वीडियोस ऐसे आपको चाहिए, मैं किसी भी टॉपिक में रिलेटेड टू ऑर्थोपेडिक सर्जरी एक एजुकेटिव वीडियो पोस्ट कर सकता हूँ, जिसमें मैं कोशिश करूँगा हर छोटी से छोटी चीज़ विद प्रूफ विद डॉक्यूमेंटेशंस आपके सामने लाऊं और आपके जो क्वेरीज हैं वो सब आपको रिजॉल्व करूँ। थैंक यू सो मच।